dear students, again I am with the chapter 4 which is of multiplication. Today we will do our 3 topics which are like this. First topic is multiply with 200, 300 and up to 900, right? And our second topic, multiply 2-digit number, with 2-digit. And next, third topic, multiplying 3-digit number with 2-digit number. And next, fourth, that is expanded. Fourth is multiplication by expanded notation. Multiplication by expanded notation. Right? Today we will do these 4 topics. First topic is our multiply with 200, 300, 400 up to 900. Our topic 2, multiply 2-digit number with 2 digits. Third, multiplying 3-digit number with 2-digit number. And fourth topic, which is new for you, multiplication with by expanded notation. Means that expanded form we have done in chapter first by that, right? Now come to topic first, which is the number multiplied by 200, 300, 400, 500, 600, 700 like that. Now come to exercise 4.7. Exercise 4.7. In this exercise, first A part is 2 multiply with 300. Now see, as we have done the multiplication with 10, 100 like this, आप क्या करो, only digit से multiply करो, forget about the zeros. 2 3s are 6 with 2 zeros, right? So answer is 600. B part, 3 multiply with 400. Again zeros को भूल जाओ, firstly numbers के साथ करो. 3 multiply 4, 12. After that 0. C part, 4 multiply 700 means again 4 7s are 28, 0. C के बाद D part, 7 multiply 600. See, आपको सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 7 6 are 40, 200. After D part, E part, 6 multiply 500. So what comes? 6 5s are 30 and 2 zeros. After E, F part, 6 multiply 400. Again 6 4s are 24, 2 zeros. After F, G part, see, it is very easy to multiply a single number with the 200, 300, 400. आपको सिर्फ क्या करना है, डिजिट की मल्टीप्लाई करो डिजिट से, leave the zeros and after that add the zeros in this. Now G part, 5 multiply 900.
5 9s are 45 and 2 zeros. After G, H, 8 multiply with 500, 8 5s are 40, so answer is 4000, right? After that I part, 9 multiply 600, again 9 6 are 54 and 2 zeros as it is. I के बाद J part, J equals to 9 multiply 800, 9 8s are 72 and 2 zeros. So this is the way to multiply a number with 300, 400, 700 and means 200 to 900, because after 900 the number is 1000, right? Now come to topic second, which is multiply a number, 2-digit number with the 2-digit number with the 2-digit number. This is clear to everyone. सिर्फ आपको forget about the zeros लास्ट में काउंट करो, how many zeros are given to you. फर्स्टली डिजिट की डिजिट से मल्टीप्लाई करो. नाउ टॉपिक 2 इज 2-digit number multiply with 2-digit number, that is 28 multiply with 73. 28 multiply with 73 कैसे करेंगे? 3 8s are, 3 का टेबल 8 तक रीड आउट करो. 3 8s are 24, 2 goes कैरी और यहाँ लिखो. 3 2s are 6, 6 plus 2 कैरी को हम ऐड करते हैं 84 हो जाएगी. नाउ जब भी आप सेकंड नंबर पे आते हो क्या करोगे? यहाँ पे क्रॉस लगाओ और यू कैन पुट 0 ऑल्सो. सो 7 8s are 56, 6, 5 comes कैरी. पहले वाली कैरी को इरेज कर दो. 7 2s are 14, 14 plus 5 19. नाउ डाउन साइड ऐड करो. यहाँ क्रॉस का मतलब होता है 0. 4 plus 0 4, 8 plus 6 14, 1 comes carry. 9 plus 1 10, again 1 comes carry. 1 plus 1 2. So answer is 2044. B part, 45 multiply with 56. 45 with 56. 6 5s are 30. 3 goes carry. 6 4s are 24. 24 plus 3 27. अगेन यहाँ क्या आएगा? क्रॉस. 5 5s are 25. What comes carry? 2. 5 4s are 20. 20 plus 2 22. Right? Now 0. 7 plus 5 12. 1 comes carry. 2 plus 1 3. 3 plus 2 5 and 2. Answer is 2520. Right? This is the way to multiply 2-digit numbers with the 2-digit number. C part, 34 multiply 65. Now 5 4s are 20. 2 comes carry. 5 3s are 15. 16 17 multiply. 6 4s are 24. 2 carry. 6 3s are 18, 19 and 20. 0. 7 plus 4 11. 1 comes carry. 1 plus 1 2 and 2 as it is. Answer is 2210. Right? Now D part, 43 multiply 25. Again
5 3s are 15. 1 comes carry. 5 4s are 20. 20 plus 1 22. Now 2 से करो. 2 3s are 6. 2 4s are 8. Now here one line downside. 5 plus 0 5. 6 plus 2 8. 8 plus 2 10. So answer is 1085. This is the way to multiply a 2-digit number with the 2-digit, right? After that, multiplying 3-digit numbers with the 2-digit number. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 digits नंबर को 2 digit numbers के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? Now we will multiply 3 digit numbers with the 2 digit numbers. Here first is E part. 135 multiply with 47. Now 7 की टेबल 5 को रीड आउट करो. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35. Here you will write 5 and 3 comes carry. Now 7 3 जा 21, 21 plus 3 24. 2 comes carry. 7 1 जा 7, 7 plus 2 9. Put one cross. 4 5 are 20. Again carry 2. 4 3 are 12. 12 plus 2 14. 1 become carry. 4 1 are 4 plus 1 5. Now add 5 plus 0 5. 4 plus 0 4. 9 plus 4 13. 1 carry. 1 plus 5 6. So answer is 6345. F part. 159 multiply with 59. Now 9 9s are 81. So 1 आप यहाँ लिखो. 8 क्या हो जाएगा, कैरी. 9 5s are 45. 45 plus 8. 45 plus 8 53. 3 comes here. 5 will be here. 9 1s are 9 plus 5 14. Multiply. 5 9s are 35. 4. 5 5s are 25. 25 plus 4 29. 2 become carry. 5 1s are 5 plus 2 7. 1 plus 0 1. 3 plus 5 8. 4 plus 9 13. 1 become carry. 7 plus 1 8. 8 plus 1 9. The answer is 9381. Right? After that, G part. G part is 128. 128 multiply with 6 3. Now 3 8s are 24. 2 become carry. 3 2s are 6 plus 2 8. 3 1s are 3. Now 6 8s are 48. 8 will be here and 4 will be carry. 6 2s are 12. 12 plus 4 16. 1 become carry. 6 1s are 6 plus 1 7. Now add 4. 8 plus 8 16.
1 become carry, 3 plus 1 4, 4 plus 6 10, again 1 carry, 7 plus 1 8. Answer is 8064, right? Now H part. This is the way to multiply 3-digit number with 2-digit number. 243 multiply with 34. 243 multiply with 34. 4 3s are 12. 1 goes carry. 4 4s are 16 and 1 17. 1 become carry. 4 2s are 8 and 1 9. Multiply 3 3s are 9. 3 4s are 12. 1 carry. 3 2s are 6 and 1 7. Now add. Cross means 0. 2 plus 0 2. 7 plus 9 16. 6 will be here. 1 become carry. 9 plus 1 10. 10 plus 2 12. 1 become carry. 7 plus 1 8. Answer is 8262. Answer is 8262. So this is the way to multiply 2-digit numbers with the 2-digit numbers, right? After that, our next topic is multiplication by expanded notation. Next topic है हमारा multiplication by expanded notation. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, गिवन नंबर को एक्सपेंड करेंगे, राइट? क्या करेंगे हम, गिवन नंबर को एक्सपेंड करेंगे. टॉपिक इज एक्सपेंडेड नोटेशन, राइट? आफ्टर दिस how we will do these questions. What do you mean by expanded notation? Means कि आप क्या करोगे, फर्स्टली नंबर को एक्सपेंड करोगे. फर्स्टली हम नंबर को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, राइट? लाइक 23, it becomes 20 plus 3, right? So now by this, first question is 46 multiply 5. So firstly हमारा बात क्या है, हम 46 को एक्सपेंड करेंगे 40 plus 6, then multiply with 5, right? Now second step क्या है, आप 1 by 1 नंबर को मल्टीप्लाई करो. 40 multiply with 5 plus 6 multiply with 5. Like this you will open the bracket. 5 ब्रैकेट से बाहर है, तो आप एक बार 40 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 6 से. नाउ 5 0 से 0, 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30, राइट? नाउ ऐड बोथ द नंबर्स टू 30, राइट? सो आंसर इज 230. दिस वी कॉल एक्सपेंडेड नोटेशन. हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड नोटेशन. डी पार्ट 78 मल्टीप्लाई विद 9. सो 78 को कैसे एक्सपेंड करोगे, 70 प्लस 8, एंड दिस एक्सपेंडेड विल बिकम इनटू द ब्रैकेट. नाउ मल्टीप्लाई विद 9. 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो. 70 मल्टीप्लाई विद 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई विद 9, राइट? अब 70 की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो 9 से. सो 9 मल्टीप्लाई विद 70, आई एम डूइंग हियर. 9 मल्टीप्लाई विद 0 0. 9 7 जा 63. आंसर इज 630 प्लस 8 9 जा 72 इक्वल्स टू 630 plus 72, 0 plus 2 2,
3 plus 7, 10. 1 becomes carry. 6 plus 1, 7. Answer is 702. Answer is 702. Right? So आपको ऐसे ही करना है. Firstly, expand the number and after that open the brackets. Remember one thing बेटा, जब भी आप नंबर को एक्सपेंड करोगे यू विल राइट द नंबर इन द ब्रैकेट्स. आप उस नंबर को ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे एंड आफ्टर दैट स्टेप सेकेंड में हम ब्रैकेट्स को ओपन करते जाएंगे एंड ब्रैकेट्स ओपन होते जाएंगे एंड फर्स्टली आप इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस बिटवीन में जो साइन आएगा वो किसका आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे किसका साइन है प्लस का. 6 मल्टीप्लाई विथ 5. राइट. नाउ सी पार्ट. सी पार्ट इज 127 multiply with 8. 127 multiply with 8. सेम ऐसे ही एक्सपेंड करो. 127 को कैसे करोगे? ब्रैकेट्स 100 प्लस 20 प्लस 7 multiply with 8. राइट. 100 प्लस 20 प्लस 7 multiply with 8. Now 100 multiply 8 ब्रैकेट्स ओपन करेंगे प्लस 20 multiply 8 प्लस 7 multiply 8. राइट. 1 by 1 ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. 100 multiply 8 प्लस 20 multiply 8 प्लस 7 multiply 8. Right. Now multiply 100 multiply with 8. 800 plus 20 multiply with 8. 8 multiply 0, 0. 8 to the 16. 160. And 8 7 the 56. Right. Now add all the numbers. This side I am doing rough work. 800 plus 160 plus 56. 0 plus 0 plus 6, 6. 0 plus 6, 6. 6 plus 5, 11. 1 become carry. 8 plus 1, 9. 9 plus 1, 10. Answer is 1016. See, it is very easy to do the multiplication with expanded notation. Right. Now come to D part. 762 multiply with 7. 762 multiply with 7. 762 multiply with 7 equals to expand. It becomes 700 plus 60 plus 2 multiply with 7. राइट. so क्या हो जाएगा अब आपका फर्स्ट स्टेप वी हैव डन. हमने एक्सपेंड कर दिया नंबर. दैट इज 700 प्लस 60 प्लस 2. Now open the brackets one by one. 700 multiply with 7 plus 60 multiply with 7 plus 2 multiply with 7. Right. Now multiply 7 sevens are 49. 2 zeros as it is plus 7 6s are 42. 0 plus 2 sevens are 40. Now add all the numbers. 4900, 420 and 40. 0 plus 0, 0. 0 plus 4, 4. 0 plus 2, 2. 2 plus 1, 3. 9 plus 4,
13. 1 become carry. 4 plus 1, 5. Answer is 5334. 5334. Now this is about the multiplication by expanded notation with 1 digits. How many digits? 1 digits. अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन with 2 digits. 2 digit number with 2 digits, but by expanded notation, right? For that, see, the numbers are like this. 45 multiply with 71. 45 multiply with 71. Now how you will expand? 45 क्या होगा? 40 plus 5 multiply 71 क्या हो जाएगा? 70 plus 1, right? So for this you have to make the box. Box will be like this: 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. See both side how many lines? 5, 5. Right? After this, upper side क्या आएगा? यहाँ multiply 40 plus 5. Here 70 plus 1. Right? Now क्या करेंगे हम? 70 की 40 से मल्टीप्लाई करो. इन दोनों के बीच में जो सिंबल है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन. 7 4 जा 28. Right? After that plus. Now 75 जा 5 7 जा 35. 0 as it is. Now add, दोनों को ऐड करो. 28 और 350. 2800 and 350. 0 plus 0 0. 0 plus 5 5. 8 plus 3 11. 1 goes carry. 2 plus 1 3. Answer is 3150. Now next plus. इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करना है आपको. 1 मल्टीप्लाई विथ 40 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 5 5. Now 40 plus 5 45. Now here you will write total. And total is 5 plus 0 5. 5 plus 4 9. 1 and 3. Answer is 3195. So what you will write? So 45 multiply 71 equals to 3195. Right? Like this you have to do 2-digit multiplication. 2-digit number with the 2-digit number. E part 38 multiply with 62. Now see, same number of box you have to draw. 5 line this side, 5 this side. So I am just erasing these numbers. Now next question is 38 multiply with 62. Expand करो. 30 plus 8, 60 plus 2. Same place पे first पे हम क्या करेंगे? 30 here 8, 60 here 2. Now multiply with these two. 6 plus 3 18. 2 zeros as it is.
After that 60 की 8 से करो, 8 6 जा 48, 0 comes here, add both the number, 0 plus 0, 0 plus 8, 8, 8 plus 4, 12, 1 goes carry, 1 plus 1, 2. Now multiply with 2, 2 3 जा 6, 2 multiply with 0, 0, 2 8 जा 16. When you add 60 plus 16, answer is 76. Now add both the number and you get the answer 2356. So this is the way to do the numbers by do the multiplication by expanded notation, right? Tomorrow we will study about the properties of multiplication and estimating the products, right?